हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय सो फ्रेंड्स हम अपनी द वॉर ऑफ हिस्ट्री गेम कंप्लीट करने ही वाले हैं। तो ये है पार्ट 2। सो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि अभी तक हमने उसका इंट्रो ही बनाया है। सो फ्रेंड्स in previous video as I tell you that part 2 will be uploaded fast. So this is a game. Oh, sound is not coming. Why? I don't know. Okay, so friends, there was a great story. मैंने story लिख दी है as you know. Okay, so this is War of History game. So let's make starting a game. Okay friends, so let's okay, if we click don't play button, what happens? So when clicked, go to a show. After this, when this sprite clicked, it should to be hide. Okay, so I want a backdrop like loading, so that will show that our game is rolling. So this looks great, you know. Okay, loading. Type it. Loading. After that, I am just dragging it to bottom, center. Okay, and let's go to codes. Okay. When this sprite clicked, switch backdrop 2. Okay, it will broadcast message जिससे हम इंस्ट्रक्शन को हाइड कर सकते हैं. So let's make variable hide all. Sorry. Let's make broadcast hide all. Okay. After this, it should be hide. When you sprite click, hide. Okay, and let's check. Okay, so we didn't code instruction to hide when he receive message. When I receive message, hide all, hide. Okay, and I'll see what happens. Okay, after this I want wait one second. Okay, wait 1 second. Okay, after this, I want to choose background like something like background like where we are outside, so outdoors. I will select which is blue sky. Where is it? Here. Where is it? Here. Choose blue sky. Okay, and after that, switch backdrop to blue sky. Okay, तो अब सब अच्छा चल रहा है फ्रेंड्स, और इज राइट. एंड नाउ आई वांट समथिंग लाइक castles where our soldiers stand and start and form great war, the war of history. Okay, add this here. Okay friends, sorry for background sounds. Okay, so this is balcony of our castle. Okay, this all right. Okay,
ओके, तो मैंने बड़ा वाला रेस कर लिया है। उसके बाद ओके, तो मेरे को कलर चूज करना है ग्रे कलर। ओके, इधर 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 बनाना है और इसका कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना है, इसको ऊपर सेट करना है। एरो की से मैंने इसको सेट कर दिया। अब ये सेट हो जाए, ओके, ड्रैग करना है। ओके, ओके, okay, so this is all great. Okay, now I will duplicate it, and where that is, yeah, and I will flip horizontal to face it left here. So I have tell you in my first video what is horizontal and vertical. Okay, so if you have not watched that video, go to my channel and watch that video. Okay, so I am just dragging it. Okay, and now we are going to code it. So when click, it should be hide automatically. If it is showed, I will just hide it. Okay, do this too, and do this to castle 2. Okay, where is castle 2? When green flag clicked, hide it, hide. Okay, and backdrop switches to
backdrop switches to blue sky. Show variable your opponent's health. Duplicate it. Greet show variable your health. ओके सो ये बेसिक है, इसलिए तो ये अब सब सही चल रहा है. ओके तो हम इसको बड़ा करते हैं. ये हमारा ओपोनेंट्स हेल्थ ये सब आ रहा है. ओके तो हम स्प्राइट चूज करते हैं. कोई नाइट मतलब कि हमारे सोल्जर्स है. ओके हम इनको डुप्लीकेट करते हैं. इनका हम मतलब कि इनको डुप्लीकेट करके हम ड्रैग करेंगे. सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना. और अगर आपको मेरी पार्ट 3 देखनी है तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाना. तब तक के लिए बाय बाय.